एवरीवन, आज संडे है तो आज भी मेरी कुछ ऑनलाइन क्लासेस हैं, बट इतनी सारी नहीं हैं जो थ्रू आउट द वीक रहती हैं। संडे को भी मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है क्योंकि इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, इतनी सारी मतलब क्लासेस रहती हैं। सो जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट आई टेक माय ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, स्पोकन इंग्लिश हो गया, एडवांस इंग्लिश हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, लिटरेचर के रिगार्डिंग हो गया, या मे बी इफ यू वांट फॉर आईएलटीएस, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई कवर, मे बी इंटरव्यू ट्रेनिंग। So this is an array of courses that I offer. Basically what happens is that every day I just get back home from my school, and after that from 7 o'clock in the evening till 11 o'clock at night I have my online classes 4 hours continuous, and sometimes even the online classes start from 6 o'clock. So today I am actually sitting with my setup for online class क्योंकि वो online class वाला feel आना चाहिए। My online classes actually take place with the help of 3 devices. Number 1 my phone, जिससे कि अभी actually shoot हो रहा है. Number 2 this is my laptop, और लैपटॉप के बाद मैंने इधर मेरे पास एक मेरा टैबलेट भी रखा है। तो ये 2-3 डिवाइसेस हैं जिसके कॉम्बिनेशन से मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो चाहे इससे मैं लैपटॉप से लूँ क्लासेस, टैबलेट से लूँ, या फिर मेरे फ़ोन से लूँ, देयर आर फ्यू issues that we always face in online classes. So today I'm just going to talk about a few problems that we often face while attending online meetings, online classes. Number 1, कभी ना वीडियो अटक जाता है, कभी आवाज़ नहीं आती है, कभी वीडियो और ऑडियो जो है वो मैच नहीं करता है, ऑलराइट। या फिर कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी कभी तो कनेक्शन ही नहीं बैठता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अब उसको इंग्लिश में कैसे हम लोग स्टेट करें। तो पहली चीज़, अगर आपका वीडियो अटक गया है, सो यू आर गोइंग टू से योर वीडियो इज फ्रोजन, योर वीडियो इज फ्रोजन, और योर वीडियो इज लैगिंग, ऑलराइट, योर वीडियो इज लैगिंग और योर वीडियो इज फ्रोजन। नंबर 2, कभी कभी आवाज़ जो है ना कट कट करके आती है। So in that case, what are you going to say? Your voice is breaking. Your voice is breaking. Or sometimes आवाज़ बिल्कुल आती नहीं है. So you're going to say you are not audible. You are not audible. Number 4, कभी कभी सामने वाला म्यूट पर होता है, इस कारण से आवाज़ नहीं आती है. You are on mute. You are on mute. All right? Or you are muted. So please unmute yourself. Alright, so this is the way you can communicate. कभी कभी वीडियो और ऑडियो का जो मैचिंग होता है ना, वो नहीं बैठ पाता है। मतलब वीडियो आगे चलता है, ऑडियो पीछे चलता है, या आगे पीछे कुछ चीज़ें चलती हैं। So in that case, what are you going to say? Your video and audio are out of sync. Your video and audio are out of sync. That means they are out of synchronization. Synchronization means, you know, the coordination, the parallelism. Alright? That means वो match नहीं खा रहे हैं. Alright? So you can say your video and audio are out of sync. Sometimes there are, you know, network issues. ठीक है? Internet की problem है. So you can say there are connectivity issues. Okay, there are connectivity issues over the internet, or you can say there are few network issues that are creating a problem. Alright? So these are few online meetings or online classes problems that we generally face, and this is how we can communicate them in English. Alright? I really hope that you found this video useful, and in case you wish to attend my online classes, feel free to contact me. I'll catch you up in my next video. Until then, happy learning with me, happy learning with me online. Bye bye.